Welcome back. I'm Uday Pratap Singh. You're joining us in Newsx. In Delhi's Dwarka, a 23-year-old boy, Sahil Daneshra, has been killed on the spot after a speeding Mahindra Scorpio driven by a 17-year-old minor crashed head-on into his motorcycle. Police say the teenager was driving without a valid license. Investigators believe he was making social media reels while speeding on the road. A video filmed from inside the SUV shows the vehicle being driven at high speed, drifting into the opposite lane before colliding with Sahil's bike. The impact was so severe that Sahil suffered fatal head and internal injuries and was declared dead at the scene. The minor driver was apprehended and produced before the Juvenile Justice Board as police registered a case of rash driving and causing death by negligence. However, he had also gotten interim bail shortly after citing his Class 10 board exams. Now the incident has sparked outrage, raising serious questions about underage driving, reckless behavior for social media, and the deadly cost of negligence. Sahil's mother has made strong appeals for justice for her son, questioning why a minor was behind the wheel and demanding accountability. The human cost? Well, Sahil was a young man. He was finishing up his graduation. He was ready to move to the UK after securing admission in a university in Manchester. However, his dreams and aspirations have all been cut short due to someone else's dangerous recklessness. Joining us now live is Ina Madan, mother of Sahil Daneshra. Ma'am, thank you for being with us today on Newsx. हम जानते हैं कि आपको इंसाफ के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है इस कठिन समय पर। ये ड्राइवर जो है वो जुवेनाइल था, ये ड्राइवर को इंटरिम बेल मिल चुका है। क्या कहेंगे इस पूरे वाक़े पर? As per the proofs police had produced, उन्होंने जो अपने लेवल पे प्रोड्यूस, मतलब मेरे सामने प्रोड्यूस नहीं हुए अभी तक, मैंने गई देखने सही करी, लेकिन जो आईओ साहब ने हमें बताया है कि उन्होंने एमसीडी के सर्टिफिकेट और जो भी डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं उसके हिसाब से वो जुवेनाइल बता रहे हैं उसको। और भी माएँ हैं जो आपकी तरह ये पीड़ा से गुजरी हैं। बहुत सी माएँ हैं जिन्होंने अपने बेटियों को खोया है और ड्राइवर जो हैं और गुनहगार जो हैं वो केवल जुवेनाइल होने की वजह से तुरंत छूट जाते हैं। क्या संदेश देना चाहती हैं आप? कितना बदलाव की आवश्यकता है? छूट जाते हैं तो उन बेचारों के पास रोने का रीज़न होता होगा ना, बाकी और 2-3 बच्चे होते होंगे, उनका मुंह देख के वो चुप हो जाते होंगे, सब्र कर लेते होंगे। मेरे पास तो एक ही था, मेरी तो पूरी दुनिया एक में ही थी, मेरे पास तो कुछ नहीं है खोने के लिए। अब मैं किसका मुंह देख के चुप होंगी? मैं तो चुप नहीं होने वाली। मैं तो उन माओं की लिस्ट में नहीं आऊँगी, मैं उन माओं की लिस्ट में नहीं आऊँगी जो अपना बच्चा खो के भी चुपचाप बैठ जाए और ऐसे राक्षसों को घूमने दे। वो मैं नहीं कर सकती। सरकार को, देश के लोगों को क्या आप संदेश देना चाहती है आज आप हमारे माध्यम से? देश के लोगों को अगर मेरा दुख देख के भी अपने बच्चों की शक्ल नहीं दिखती तो मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, लेकिन कोई ना कोई बलि चढ़ता है तभी चीज़ें सुधरती है। आप प्लीज़ मीडिया, सरकार और सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस परिवार के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। इट शुड नॉट बी स्प्रेड, नॉट स्प्रेड। ये मामला ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। मैं मीडिया से भी बार बार कह रही हूँ कि आप आज एक साथ सारे लोग आए हैं, लेकिन थोड़े टाइम में आपको लेटेस्ट हॉट न्यूज़ मिलेंगी और आप लोग इसको भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक माँ के साथ मीडिया भी फेक कमिटमेंट मत करना प्लीज़, आप लोग ऐसा मत करना। मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, आखिरी तक मुझे सपोर्ट चाहिए सरकार से, सिस्टम से, मीडिया से, आखिरी तक मेरे बच्चे के इंसाफ तक। इसको खबर बना के मत छोड़ देना। यहाँ पे आके अपनी हॉट न्यूज़ चलाने के चक्कर में भूल मत जाना मेरे बच्चे को। जी, क्या जुवेनाइल के नाम पे जो प्रोटेक्शन भी दी जाती है, ये अपराधियों को सरकार के द्वारा, वो तुरंत आपको लगता है बदलना चाहिए? अब इसकी रोक होनी चाहिए ताकि और भी माएँ इस पीड़ा से ना गुजरें। बिल्कुल बदलना चाहिए। 17 साल इज ऑल्सो नॉट जुवेनाइल, आई डोंट कंसिडर इट जुवेनाइल। 17 साल बिल्कुल एज पे होता है, बिल्कुल बॉर्डर एज पे है 18 के। इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज जुवेनाइल।
और जुवेनाइल के केसेस में माँ बाप के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए कि लोगों को खौफ हो। अपने घर से ही शुरुआत होनी चाहिए, लोगों को खौफ होना चाहिए कि हमारे बच्चे कुछ गलत करेंगे तो पहले हम फंसेंगे। ये फियर नहीं है लोगों को। और ये फैमिली तो बहुत ज़्यादा करप्टेड है, बहुत ही ज़्यादा करप्टेड है। इतने मल्टीपल, मैं तो अभी 2 स्टेट के चालान निकाले हैं, पता नहीं और कहाँ कहाँ के चालान होंगे और वो कहाँ पे और क्या क्या नहीं। जी नहीं, बिल्कुल हम आपके साथ हैं इस न्याय में। मैम, मीडिया से आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं इस वक्त? मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, मैं पुलिस सिस्टम, मीडिया, सबसे यही कह रही हूँ कि इस केस से रिलेटेड और जो एविडेंस इस लड़के के फादर के खिलाफ और इस फैमिली के खिलाफ जो भी एविडेंसेस निकल सकते हैं वो निकाले जाएं, वो हाईलाइट किए जाएं, सिक्योर किए जाएं, और जितने एविडेंस हैं उनकी सिक्योरिटी की श्योरिटी, चार्जशीट प्रॉपर बननी चाहिए, उसमें हर माइनर डिटेल मेंशन होनी चाहिए, कुछ भी लैकिंग नहीं होना चाहिए कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिल सके। कोई भी ऐसा निगलेक्शन नहीं होना चाहिए, नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। सबूतों में मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। चार्जशीट में जो एविडेंसेस प्रोड्यूस हो उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, वो बहुत केयरफुली बननी चाहिए। इना मदन, इस दुखदायक समय में हमारे संग जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं आपका, और हम बिल्कुल आपको आश्वस्त करते हैं कि आपकी लड़ाई में हम आपके साथ हैं और वाकई में अब सुधार की आवश्यकता है। मैं बाकी मेहमानों का भी अब रुख करना चाहता हूं। ब्रिंडा डीगे, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे संग जुड़ गई हैं। एलन राव, former DCP Special Cell, Delhi Police, is with us live. Seema Kushwaha, advocate, Supreme Court, also joins us in the broadcast. Brinda DK, how many more, men, how many more humans will have to lose their lives before the system changes, before juvenile laws are made stricter, before, such individuals are caught before they kill a human? Reportedly multiple challans for speeding that this car had, yet it continued. This brazenness, yet these real videos continued, yet the parents continued to allow this minor to drive the car. Why did this happen, Brinda? Why did Sahil have to lose his life? You're absolutely right. I don't think that there should ever be another Sahil. We, the citizens, are not here to give our lives, sacrifice our lives, our children and our family members so that the system can change. The system is already being paid by us, are the taxpayers, telling them to do that work. Now, first thing is, if this particular Scorpio had multiple challans, traffic violations, why was it never pulled up? Why is it that in this age, we are talking of digital India, that when a vehicle passes at any point, or probably even the red lights, the signal lights, why does this not flash that you have 20 violations and you will be pulled up? Why is it that the police have not taken cognizance of all of this? Now, one part of it is the police never stop any high-end vehicle. And Scorpios and Lamborghinis and Porsche are all part of that same family. The police know that these belong to rich, influential, politically connected people. So the police will do nothing. Now, in this particular case, we want also the police to be held accountable. But before that, what was the need to give any bail to this juvenile? Bail is everybody's right, I understand. But this juvenile is not worthy of that bail. If he wants to write his 10th standard exam, he can do so sitting in the juvenile home. Nothing wrong with it. And if they have allowed the juvenile to go out, why are the parents not inside? What has this family forfeited? Nothing. On the spot, a child, a man, the only child of this mother, is gone. And the culprits are roaming free. So it is time that our laws are amended. Our traffic laws are amended, our motor vehicles laws are amended. The Juvenile Justice Act also requires to be amended, because we ask similar questions when a juvenile rapes, commits sexual assault and abuse, and allowed to go in for whatever, counseling and all kinds of reformation.
You and I know that recidivism is very high. In this case, that fellow was doing a reel. And if that guy was given the vehicle to do the reel, then the parents are culprit number 1 and 2. Third culprit only is this juvenile. Yes. So I think it is time that the police register the case on the actual culprits and put them behind bars. Absolutely. Should that be done immediately, Elendra? Should that be done immediately by the police? You know, because the mother is outraged that within a few minutes, possibly a couple of hours, the juvenile was out on bail. He was in interim bail. I think examinations or something is the excuse. I mean, this is shocking. This one poor boy's life is ended. He forget exams, he can't continue his life. And here, for flimsy excuses, the juvenile has been let out on bail. Should others also now be held accountable for his actions? After all, who gave him the vehicle? Who was filming this reel? Should all of them also be booked immediately, as Brinda is suggesting? Good evening, Uday. This is really a very sad incident. I have heard the mother of the deceased, only son of their family. It's very alarming and very tragic incident. And definitely, you are right that the other person should also be held responsible. Particularly, I must explain you about the legal provision in MV Act, Motor Vehicle Act Amendment, Section 199A, to Act of year 2019. It says that the Section 199A, owner or the guardian allowing a minor person to to drive such any vehicle without license. Definitely minor will definitely not having any license about it, and that there is a provision of fine of 25,000 rupees and 3 years imprisonment to the owner or guardian of that person. Number one. And that vehicle registration should be cancelled at least for the 12 months, 1 year cancellation of the vehicle. That is the provision in law. And what about the bail in this case? I'm of the opinion that this is not a case of simple rash and negligent driving. This is a case of culpable homicide not amounting to murder. I will explain why it is so. Number one, that minor child was given a Scorpio car to drive on the road in Delhi, Dwarka, and another thing that he was making a stunt, making a reel out of that driving, that he was very much in knowledge that doing so, he can endanger the life of any person, and that any person can be hit and killed in this case. So the section, I think they might have been registered the rash and negligent driving, which is not correct in this matter. It should be culpable homicide not amounting to murder, with section 105 of BNS. In this case, 10 years is imprisonment, and this case is non-bailable session, trial by session court. So this section should be applied in this case, so that the justice can be given to the deceased family, the family of the deceased. And secondly, that the parents also should be held liable in this case, and any person, I think his sister was making the reel, that she should also be held liable, because she was allowing this person, minor person, driving a vehicle without license on the road, on the speed. And number three, that very important aspect of this case is that this vehicle was having so many other challans in the past. And why these challans were not flagged out by the traffic police or any other agency like the transport department, because so many challans, definitely they were on this vehicle, and having most of these challans are stated to be of the overspeeding. This overspeeding challans, not complying with these challans, it definitely speaks very carelessness and negligence on the part of the civic law enforcing agencies, maybe traffic or the transport department. So I think that considering this case very serious nature, we should act immediately on this on all these aspects. Particularly, the section of the offence should be that's 105. Earlier it was 304 IPC. Now it is 105 BNS. Bharatiya Nyaya Sanhita. Okay. If this section is implemented, then yes. this
then this seriousness of this case will definitely be. Yes, because we've seen this before also, Seema Kushwaha, at how, juveniles unfortunately are let off just because of their juvenile status. You saw it in the Nirbhaya case that you yourself fought for so many years, and now another, mother is having to go through this, and she is saying, why should he be treated as a juvenile? He's 17. He's almost an adult. And look at what he is doing. And yet, the law is soft on him. 2016 में जुवेनाइल एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया, उसके बाद से अगर वो अबव 16 है, कोई भी पर्सन अंडर 18 है, और अगर वो हीनियस क्राइम करता तो डेफिनेटली उसको एज ए अडल्ट ट्रीट किया जाएगा. इस पूरे केस में मैं जो समझ पा रही हूँ, सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी, क्योंकि डेफिनेटली वो जो लड़का है जिसने ये क्राइम किया, उसकी सिस्टर साथ में है, और इवन की उसके फादर भी इन सारी चीजों के लिए लायबल है. जो सेक्शन एमबी एक्ट का है 199 सब क्लॉज ए में कि 3 ईयर का पनिशमेंट है, तो डेफिनेटली उनको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ. लेकिन पुलिस के साइड पर अगर 304 जो कि अभी नाउ 105 बीएनएस है सेक्शन, उसमें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, अगर ये सेक्शन पुलिस लगाती तो ये हीनियस क्राइम की कैटेगरी में आता, और अगर ये हीनियस क्राइम की कैटेगरी में आ जाता ये क्राइम, तो इस लड़के को जो एक्यूज है इसको एज ए अडल्ट ट्रीट किया जाता, इसकी बेल ग्रांट नहीं होती. तो ये टेक्निकल जो पॉइंट है जिसका मुझे लगता है कि पुलिस के साइड से नेग्लिजेंसी हुई है, क्योंकि प्राइमा फेसाई जितना मैं समझ पा रही हूँ, जो मैंने वीडियो देखा है कि जिस रोड पर वो कार ड्राइव की जा रही है वहां पर स्पीड जो है लिमिट करीब 20 से 40 तक है, उनकी मदर बता रही, क्योंकि वो उस टाइम जाकर के उन्होंने सब कुछ देखा है. लेकिन अगर हम उस कार का वीडियो देख रहे हैं जी, लगता है सीमा से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है, मगर मैं वापस आपके पास आना चाहता हूं ब्रिंडा, on when these reforms will finally happen. As I was just telling Seema Kushwaha, we saw it in the Nirbhaya case, Juvenile Justice Act, few amendments were made, but obviously it's not enough. The parliament just has to make up its mind, political will, nothing else. There is no need for us to sit and do meditation and prayers and things like that. It is the job of the parliament to see that these are increasing on a daily basis, and the police are also wriggling out of registering the correct sections. Maybe, as I told earlier, that because of influential people, but you put a stringent law in place holding police accountable. If police, somewhere we find out that they have been negligent, that they have been hand in glove in trying to reduce either the section or the gravity of the crime that has been committed, then I think police also need to get registered. So let's have a law like that. And parents must be booked. Nothing stopped the police from booking. Why have the police not booked? So in this particular case, I think it is time that the SP or the DCP pull up all those police officers who are in the police station at that particular time, not having booked the correct sections. Right now, there is also no dearth of law. We have enough laws just now. Why have they not done? Culpable homicide is something they can do. Either the police is not trained, not literate, or the police is in nexus with whoever are the culprits. So let all of this come out. Why is it not coming out? Why are we continuously talking about a bail? The Juvenile Justice Act, the Juvenile Justice Board should also understand, like Madam pointed out, an amendment has happened. So why did you give bail? He wants to write 10th standard exam. Is it so important? You have to write an exam? You can write an exam anyhow. You can even write it sitting inside the government children's home. Do so. Why have you not done so? Why did you give bail? What is the message you are giving when you give the bail out? Absolutely, absolutely. Seema Kushwaha, I think, is back with us. Yes, Seema, you were telling us about these reforms and how unfortunately they've not led to much change on ground. एक्चुअली जो मैं बात कर रही थी उसको कंटिन्यू करती हूँ कि अगर इस केस में एक मेरे पास केस है, मैं उसको डिस्कस करती हूँ. वो केस भी मीडिया में बहुत हाईलाइट हुआ था. ये 2023 में द्वारका के पास एक जगह है, ये भी द्वारका में ही हुआ.
यस, ये भी द्वारका में हुआ है। द्वारका के पास, जनकपुरी के पास का ये केस है। 2023 नवंबर का केस है। एक पर्सन अपनी फैमिली के साथ, जिसमें उसकी वाइफ, एक 8 मंथ का बच्चा और एक 8 साल का बच्चा उस मदर की गोद में है, और एक 8 साल का बच्चा आगे खड़ा हुआ है, स्कूटर से जा रहे हैं। पीछे से एक कार आती है, उसको हिट करती है, और वो करीब 100 मीटर के डिस्टेंस तक वो पूरे लोग घिसटते हुए जाते। ऑन द स्पॉट 3 डेड बॉडी थी वहां पर। हस्बैंड की डेथ होती है, एक 8 साल के बच्चे की डेथ होती है, 8 महीने के बच्चे की डेथ होती है। प्रामा फेसाई इस केस को भी बनाया गया था 304A, रेसलेस ड्राइविंग का केस था ये। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने, मेरे पास वो आई, प्रीति नाम है उनका, प्रीति वासेन, अभी ये केस 30 हजारी कोर्ट में चला है सर। इसमें 304 भी लगा, उसके अलावा एडिशनल एक सेक्शन आर्गुमेंट ऑन चार्ज पर 308 भी लगा, क्योंकि उनकी जो लेडी थी वो 2 महीने तक एडमिट रही हॉस्पिटल में। तो अगर 304 लग रहा है तो 308 भी लगेगा, क्योंकि अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस। इस केस में भी अगर पुलिस, जो वीडियो देख रहे हैं हम जिसमें रेसलेस ड्राइविंग है, लेकिन उस पर्सन को ये नॉलेज है, एक्यूज को, कि हम जो एक्ट कर रहे हैं उससे किसी की डेथ हो सकती, तो डेफिनेटली ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस था। एफआईआर में ये सेक्शन आना चाहिए था 105 बीएनएस का, तो इस लड़के की बेल ग्रांट नहीं होती है। हम लॉज में अमेंडमेंट कर देते हैं, जुवेनाइल एक्ट में भी किया 2016 में, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में टेक्निकल ग्राउंड पर पुलिस हमारी वर्क क्यों नहीं करती है। 199 नहीं, बिल्कुल आपका बहुत वैलिड पॉइंट है, आपका बहुत वैलिड पॉइंट है, और एक पुलिस पर्सपेक्टिव इस पे ले लेते हैं। लेन राव, लास्ट वर्ड टू यू, विल द पुलिस आल्सो नाउ वेक अप एंड पुल अप इट्स सॉक्स? Definitely, Uday, this is a very clear case of awakening the police, and the police have taken right course of action while invoking the sections of law, and also taking action against the parents, so that it have been a very string example for others in Delhi or in India, so that nobody would dare to give any vehicle to the minor person or person who is not having a driving license. And this is in my opinion, and also I agree with ma'am, advocate ma'am, that this is a fit case for invoking 105 BNS, so that that the bail cannot be, it's a non-bailable offence, trial by sessions court, and that if the police will investigate on these lines, because I have given the reasoning also, without license, minor, and driving on the road, making a reel, and also I think it is stated to that he ran away from the accident spot immediately after. I'm afraid we've run out of time. My thanks to our guests for joining us on the broadcast. We're slipping into a very short break.